हेलो स्टूडेंट्स आज आम वीडियो रे एक्सरसाइज 7K रो क्वेश्चन नंबर 10 आउ क्वेश्चन नंबर 11 करवा। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो आम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 10 रो अच्छी फर्स्ट बिट रे फाइंड द dy by dx if y equal to under root sin x plus sin x plus under root sin x plus dot 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 up to infinity। এটা আছে এটা গোটে ইনফাইনাইট সিরিজ। सो इनफाइनाइट सीरीज रो डेरिवेटिव आमे केमती बाहर करबा। फर्स्ट आको आमे स्क्वायरिंग कर दवा बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर देला असलाटा y स्क्वायर इक्वल टू जते बळे राइट साइड स्क्वायरिंग करबी अंडर रूट कैंसिल हो जिवो दैट इज sin x प्लस अंडर रूट रे sin x प्लस अंडर रूट रे sin x प्लस अप टू इन्फिनिटी। This is equal to sin x plus this is y. So y sin x plus this is y। जेतु एटा इनफाइनाइट सीरीज अच्छी सो एटा को हम रिप्लेस करले y। एबे एटा इम्प्लिसिट फंक्शन हे गला तो सिंपली हमें डिफरेंशिएटिंग करबा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। so y square derivative होची 2y into dy by dx। it is sin x derivative होची cos x plus y derivative होची dy by dx। एबे हमें dy by dx को सेम साइड को नहीं छिबा नहीं चला पर कॉमन नहीं गले 2y minus 1 into dy by dx equal to cos x। This implies dy by dx equal to cos x divided by 2y minus 1। ये आंसर। सो इट गोटे इनफाइनाइट सीरीज थिला अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x। तेणु आमे ताकू जस्ट स्क्वायरिंग करी बा फल एटा गोटे इम्प्लिसिट फंक्शन को चेंज हो गला तापर सिंपली आमे डिफरेंशिएटिंग करी पाई गले dy by dx। सेमती आमे आ गोटे इनफाइनाइट सीरीज नवा सेटा होची क्वेश्चन नंबर 2 रे y इक्वल टू 1 डिवीजन x x प्लस 1 डिवीजन x प्लस 1 डिवीजन x plus 1 division continuing like this। ओके आपको हमें जदि एमती लिखी दवा सेटा हबो 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस अप टू इन्फिनिटी। या को हम जस्ट सिंप्लीफाई कले एमती लिखि परिबा। सो इथे हमें y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस e प्लेस रे हमें y रिप्लेस कर देले कना y होची से 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अप टू अछि तो x प्लस दिस इज y। सो एबे आको टिके सिंप्लीफाई कर दो y होल इनटू x प्लस y इक्वल टू 1। This implies xy plus y square equal to 1। एबे हमें डिफरेंस एटा इम्प्लिसिट फंक्शन है गला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x with respect to x। so the xy derivative 1 तो y plus x into dy by dx y square derivative होची 2y into dy by dx
constant derivative अछि 0. So etu dy by dx common नहीं गले x plus 2y equal to minus y, then dy by dx equal to minus y divided by x plus 2y. So ये है answer. Next question है मेरा question third. Y equal to ln x plus ln x plus ln x plus up to infinity. Okay, infinite series रो आमे डेरिवेटिव बाहर करिवा dy by dx. So ln x plus a up to ln x plus को y replace कर परिवा. So we got y equal to ln x plus y. Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. So with respect to x. So dy by dx ln is 1 by x plus y, extra derivative 1 plus y is dy by dx. So multiply कर ले 1 by x plus y plus 1 by x plus y into dy by dx. So taking dy by dx on the same sides, left side. So dy by dx common ela par, this is 1 minus 1 by x plus y equal to 1 by x plus y. So dy by dx LCM gala x plus y. So x plus y minus 1 equal to 1 by x plus y. X plus y is cancel out. So dy by dx equal to 1 by x plus y minus 1. This is the answer. So question number 10 complete हे गला. ये थिला derivative of infinite series. एबे हमें question number 11 करिबा. जो question number 11 रे अच्छी question अच्छी if cos y equal to a important questions जोटे के अच्छी cos y equal to x cos a plus y, then prove that so dy by dx equal to cos square a plus y divided by sin a. Solution I prove करिवा derivative हबो cos square whole into a plus y divided by sin a. Now cos y equal to x cos a plus y. So इठी हमें एमती करि परिबा x equal to cos y divided by cos a plus y. Now see, x is a function of y, so we can find dx by dy. So find dx by dy. dx by dy. Question rule पकेबा u by v रा rule. तो cos square a plus y, cos y रा डेरिवेटिव होची minus sin y. तो ये cos a plus y is constant minus cos y is constant. तो ये minus sin a plus y, तो minus 1 plus sin a plus y. So ये गोटे फॉर्मूला आसिला sin a plus b sin a into cos b minus cos a into sin b, जी की फॉर्मूला हला sin a minus b, sin a plus y minus y divided by cos square a plus y. Plus y minus y cancel out, so we got sin a divided by cos square a plus y. So mu pahile dx by dy is
sin a divided by cos square a plus y. तो आमे dy by ds पाइबा dy by dx equal to cos square a plus y divided by sin a. तो proved. Good important questions. Next 11.2 आमे करिबा 11.2 रे अछि if e to the power theta phi equal to c plus 4 theta phi so that phi plus theta into d phi by d theta equal to 0. Okay, ये हमको गिवन अच्छी e to the power theta phi equal to c plus 4 theta phi हमको शो करियार अच्छी phi plus theta into d phi into d theta equal to 0. So proof हम start करिवा जोड़ा गिवन अच्छी सेटू नवा e theta phi equal to c plus 4 theta phi जेतु with respect to d theta रे हमर डेरिवेटिव अच्छी तो both side हमें डिफरेंशिएटिंग करिवा with respect to theta e to the power theta phi equal to d by d theta of c plus 4 theta phi. Now its derivative is e to the power theta phi into d by d theta of theta phi. A constant derivative 0 plus 4 into d by d theta of theta phi. Okay, now taking common, so we got e to the theta phi minus 4 into d by d theta of theta phi equal to 0. Taking same sides, a portion asla 4 into d by d theta of theta phi. तो लेफ्ट साइड को नहीं गला परे d by d theta into theta phi common, so e to the power theta phi minus 4. एबे एथर तो किसी डेरिवेटिव पोर्शन नहीं, so we got here d by d theta of theta phi equal to 0. इटे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिवा थीटा रो डेरिवेटिव 1, so phi plus theta रो कांस्टेंट d phi by d theta equal to 0. तो प्रूव्ड. so आज हम एतिक रे रखिबा, नेक्स्ट वीडियो रे आउ आगु क्वेश्चंस करिवा. थैंक यू.